Let's talk about metallurgical advancements. As supercritical plants are involved with high temperature and high pressure, there must be a suitable material in the boiler which can withstand those high temperature and pressures. For that, engineers are specifying P91 and P92 in steam systems. This material is chosen on the basis of the temperatures involved in the process where it's going to be used. If the temperature region is up to 427 degrees Celsius, chrome equivalent carbon steel or P36 is used. If it's between 427 degrees Celsius to 552 degrees Celsius, P11 and P22 materials are used. If it's above 552 degrees Celsius, P91 or P92 materials are used. From the past few years, forged valves are considered as an alternative to cast steel valves for high pressure applications. You can see the damage caused due to flow accelerated corrosion image on the right side. There are few defects which are caused due to high temperature and moisture present in the boilers like this. Now I call Devashish to continue further. Hmm. Thank you, Purna. Good evening, everyone. I am Devashish Prasad and I will be presenting the topic of ultra supercritical technology in thermal power plants. And as you can see in the slide, we have mentioned Ntpc Khargane, which is India's first ultra supercritical power plant, which operates at a temperature of around 600 degrees and 270 kilogram per centimeter square pressure, which is a standard for ultra supercritical plants. And the plant also provides a nameplate capacity of 1,320 megawatts of electricity with an efficiency of around 41.5%, which is comparatively high than the subcritical and supercritical plants. This high efficiency is obtained due to high temperature and pressure at which the plant functions, and therefore the boiler should be able to withstand such extreme conditions and key components whose performance is vital for the ultra supercritical plant are high pressure steam piping, superheater, and water well tubing. Material selection for all of these components is very crucial. Now we can move on to the next slide. Next slide, please. As for selecting the best material for the boiler, it is a job of a metallurgical engineer to look upon certain properties and functions, such as high creep strength, weldability, thermal fatigue strength, etc., of a material before nominating it for practical use inside the boilers by performing various tests. Tests where terms like creep rupture strength and weldability comes into play, where 100,000 hours creep rupture strength is defined as the stress at which creep rupture occurs at 110,000 hours and operating temperature, and it acts as a deciding criteria for the creep resistance of power plant steels and alloys. Whereas weldability is a measure of the ease with which a metal or an alloy can be welded or joined without degradation. These processes are valuable to us to determine the material property and its adaptability to extreme conditions. This has also led to development of chromium and molybdenum-rich steel alloys, replacing the low alloy ferritic steels, where P92 and P122 are some of the notable examples. Now I would like to finish my presentation and let my colleague Simran take over. Thank you. Good evening, everyone. Myself, Simran Behra. I'm going to describe about AUSC technology. Now, till now, we have seen how new technologies have been developed with different parameters with passing times. Now, let's understand what is AUSC technology. Advanced ultra supercritical pulverized technology, it demands to operate at a high temperature with critical temperature and critical pressure of water in range of about 700 to 760 degrees Celsius and 350 bars. Now, it not only this, but it also targets for a greater efficiency, which is above 50%, which will result to reduce the carbon emissions by 20%. And in general method, we know that by 1% increase in efficiency, it will lead to decrease in carbon emissions like SOx, NOx by 2.5%. And
Currently, government has given 1,500 crore for the initiative of the 800 megawatt pulverized coal technology. A consortium of Ntpc, HALE, and IGCR is currently doing their research and is engaged in to pursue about a change on AUSC program. It has two stages. Stage one is R&D program, and the stage two is demonstration of 800 megawatt. Now, let's look at the goals. Now, AUSC come up with different goals, like here it's seen, lower emissions, NOx, SOx, CO2. Now, NOx is nothing but a combination of nitrogen dioxide and nitric oxides. Similarly, for SOx, it's also a combination of sulfur oxides. And it has other some goals also, like it aims to improve the electric power generation. It also aims to lower the cost of electricity. And in order to carry out all these, we can say that to make thermal power plant very much essential, here in India, NTPC is going to set up the AUSC plant. Now here we can see the future plans. The future plans of development are decided keeping in mind that optimization of various techno-economical parameters is only possible if plant can be designed to give high availability and good results for the desired service period. Can we have the next slide, please? Next slide. Yeah. Now, here you can see the selection of materials. Now, it's not that a 710 to 720 degrees Celsius will have, the all the new materials will replace the earlier materials. It's not like that. Some of the materials will remain similar, like in subcritical units, especially the condenser part and the feed water pipes, the water pumps, and those materials which are used in boilers for reheater and for superheater zone, those only will be changed. So you can see that how AUC technology has led to the evolution of austenitic steels, ferritic steels, and mainly the nickel-based alloys are being used. So here are the materials you can see. Grade 23 steel are being used for water balls, in boilers especially. Grade 91 steel for superheater and reheater tubing. 304 H copper austenitic stainless steel are used for the final stage of superheater tubing, and the nickel based alloy 617, or we can say the inconel, which we can produce by the welding process, especially the GMAW welding. Can we have the next slide? Yeah, here you can see the changes of AUSC technology. Now, AUSC technology comes up with many challenges. Like it's not only operates us to operate at high temperature, but also us requires breaking of steel barriers with the use of new nickel-based alloys, which are to be used in boilers, turbines. Now, AUSC plant will fit the lower emissions. To lower the emissions, it will fit the control emission systems like FGD, ECR. Now here you can see the challenges of AUSC technology, like the new nickel-based alloys are required for the manufacturing technologies. The steam turbines and boilers are need to be developed. Now you can see that the boilers and steam turbines in India, it has not been developed so far, but still we are working on it. Here you can see the graph, how the technology has been developed so far from subcritical to supercritical, then to ultra supercritical, and now very soon we are coming up with advanced ultra supercritical. So here you can see that how with increasing parameters like temperature, pressure, even with increasing efficiency, it's growing on. Only we need to note that with 1% increase in efficiency, there will be a decrease in lower the emissions by 2.5%. Okay, now these are the issues of AUSC technology which we will face, like forgings for turbines, a nickel-based alloy 617M, and the thick piping header and alloy 617M, chromium molybdenum steels.
So now we can say that in NTPC seems to be a very proposed location to set up this AUSC plant. Why? Because it fulfills all the requirements starting from the water requirement, coal transport facility, and even the switch gears are also present over there. So now let's look approach for mechanical design of turbine components. Design of components for high temperature involves lots of complexities and repulsion of failures could be severe and can even result in loss of life. Materials which are used in creep zone need long-term expensive material testing for generating reliable materials properties data for design. So here you can see how much complexities and failures we need to face, but still we'll develop this AUC technology to reap the benefits so that India will reap the benefits of indigenous technology. Now, my friend Pavan will speak about the advances in material technology. Thank you. My name is Pavan Sudhir and I'm from NIT Raipur, and I would like to discuss about the need for efficiency. So till now we have seen the way technology has moved from subcritical to ultra supercritical, and now we are talking about advanced ultra supercritical. So you might be thinking, why are we working so hard, and why do we need to develop such efficiency, develop such technologies? There are two primary reasons. One is because of crisis of energy, crisis of sources, crisis of fuel, which is coming up. So this has forced people to get has forced people to develop other technologies and to depend on other sources, but not primarily only on these conventional fuels. So we have seen many changes being taking place, and the rate at which these changes are taking place is really, really great. And the other primary reason is because of release of CO2. As we all know, release of CO2 will have detrimental effects, and in our day-to-day life, there's huge demand, which means huge electricity needs to be produced to meet that demand, which means more and more conventional fuels, which means again more and more CO2 will be released. So that is the main reason. That is the second main reason why people are running towards better efficiencies and better technologies. So a power plant is said to be more efficient when it is able to produce more energy by using less fuel. So which means less CO2 will be released. Tackle such issues, environmental issues related to release of CO2, people are working on, researchers are working on to develop much better technology, to develop much better efficient power plant. So next slide, please. Can you please change this? So let's talk about India's ranking and what is the status of India regarding the power generation and consumption. As we all know, India has developed a lot from its independence until now. It has moved a lot. It's the rate at which it is developing is really, really high, and it stands second in the world after China. And apart from that, more and more investments are taking place, and there's a huge demand in India to meet such needs. Huge amount of electricity is being produced, and the production is also very much increasing. And apart from that, Please increase your speed. You already crossed your limit, time yes, sir. limit. Yes, sir. So India will be ranked second. It is projected that by 2050, India will be ranked second in the world. So to meet such demand, India must look at other greener sources to reduce the CO2 emissions. Thank you, and I would like to ask next team member to please take this presentation forward. Thank you, Paul. Good evening, everyone. So the future, the goal for power plants is to increase efficiency and reduce emissions. And in the thermal power plants, the advancement in materials are required to achieve these goals. A lot of research is currently going on for the material selections in the AUSC plants. Nickel-based alloys are the prime candidates for the many of the components of these power plants. Several nickel-based alloy have already gone through several tests, such as alloy 740. This material was tested at 700 degrees Celsius and 750 degrees Celsius. It has chromium, cobalt, and nickel as the primary component.
The testing at high temperatures and long exposures resulted in large gamma prime precipitate and Cr23C6 precipitate for formation in this material. The tensile strength and yield point both increased with long-term aging. Another nickel-based material, HR6W, with the composition mainly of chromium, iron, and nickel, has long-term creep strength and has better weldability than gamma-based such as alloy 740. Similarly, other nickel-based materials are being tested at high temperature and pressure and exposed for a long period of time to find out which alloys will stand this condition the longest. Next slide, please. So the power plant requirements are very likely to remain the same, but the energy resources are limited. Innovative materials are required to be developed. These materials will increase functionality, can improve the energy productivity of power plants. Breakthrough in metallurgy and material science are needed. This discovery of new materials, advanced metallurgical process, and associated production technology will significantly help reduce cost, energy use, and improve product quality. I would like to thank Ntpc for providing us this opportunity to make and present this project, and thanks to everyone for listening. Thanks. Okay, thanks, but lot of time भी लिया, lot of content रखा आप लोग. Okay, anyway, this is the last presentation करके हम time भी जो ना थोड़ा सा exception दिए, लेकिन आप लोग कभी भी जो ना कैसा रखना है, आपका सब्जेक्ट क्या था एक बार पहले जाइए. सब्जेक्ट क्या रखा, आपको टाइम लिमिट जो दिया था ना, टाइम स्लॉट 15 मिनट्स का ना. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कभी भी जो ना टू दी पॉइंट रहने से बेटर रहेगा. इसलिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने के समय में क्या रखे थे, क्या देने के लिए बोले थे, एक पीपीटी, एक वर्ड फाइल में so much data you can store so much data in word file, but in पीपीटी क्या है, बुलेट पॉइंट्स टाइप का रहना है. सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस का जरूरत नहीं, ठीक है ना. बुलेट पॉइंट्स टाइप का रहना है. देन क्या है, आपका टाइम कितना दिया है, उसी के साथ क्या करना है, उसी के साथ आपके पास भी घड़ी रहेगा. जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसा करके जो ना किसी से जेस्चर से या किसी से ऐसा करके आप टाइम मैनेजमेंट करना बेटर है. अभी आप लोगों का लगभग जो ना 3-4 मिनट ज्यादा भी हो गए, पता है ना आपको कितना टाइम हो गया, पता है? कोई मैटर किया आपका बैच का ग्रुप वाला? हाउ मच टाइम यू हैव टेकन? एनीबॉडी नोस? सर 20 मिनट्स. हाँ, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया, 4-5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया. Okay, 4-5 minutes doesn't matter actually, but when it is a timeline, then it is to be completed in the time frame. Okay, for that it matters. Okay, suppose if I stop you by 15 minutes itself, you will lose to explain a few data. Okay, and one more thing, 15 minutes के साथ content के साथ जो बोलना, आपका subject is, आपका topic subject जो है ना, to the point है. क्या है? सुपर क्रिटिकल टू अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ऑल दोस थिंग्स. उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? एक्चुअली जो ना प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, थर्मल पावर प्लांट में स्पेशली, एज इट इज थर्मल पावर प्लांट जनरली, एफिशिएंसी जितना बढ़ाने से उतना अच्छा है. क्यों? एफिशिएंसी नहीं बढ़ाने से क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ाने से क्या है फायदा है? क्योंकि फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा. फ्यूल कंज्यूम हो गया मतलब बाई प्रोडक्ट भी जो ना कम हो जाएगा ना. CO2 एमिशंस कम हो जाएगा और द सेम आउटपुट. तो उसके लिए जो ना जो रिक्वायर्ड पैरामीटर जो है एफिशिएंसी. देन हाउ दैट हायर एफिशिएंसी विल बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड फॉर दैट. समझ रहे हैं? हाउ यू कैन अचीव द हायर एफिशिएंसी? हायर एफिशिएंसी इज आपका रैंकिन साइकिल सभी जो है ना मेन, उधर एक जगह पे रैंकिन साइकिल बोल सकते हैं. बोल के जो ना हायर एफिशिएंसी इज फंक्शन ऑफ योर पीएच डायग्राम में बोल सकते हैं ना आपको. higher pressure, operating pressure and higher temperatures. Okay, you need higher temperature and higher pressures, especially you need for higher efficiencies. Okay, but
For that, Yes. what are the materials available? What are the material side limitations? For that, if you are able to, suppose अभी आप जो बोल रहे हैं, जनरली अभी आपको पता है ना, फर्स्ट सुपर क्रिटिकल यूनिट इंडिया में कौन सा वाला है, कहाँ पे आया फर्स्ट सुपर क्रिटिकल यूनिट इन इंडिया? So CPET is NTPC's first supercritical. Yes, exactly. And फर्स्ट एडवांस सुपर क्रिटिकल वाला कहाँ पे आने वाला पता है? The USA. हाँ, AUSC. देखिए, सुपर क्रिटिकल एडवांस सुपर क्रिटिकल भी है और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल भी है. सुपर क्रिटिकल एडवांस सुपर क्रिटिकल, देन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल. ओके, अभी तक जो ना एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स भी आ गया, लेकिन और एक एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट भी आने वाला. वो कहाँ पे आने वाला पता है आपको? इंडिया में NTPC में आने वाला है. एनटीपीसी सीपत में आने वाला. सीपत में आने वाला है. एनटीपीसी सीपत में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट आने वाला. Yes sir. ऑलरेडी एनआईटी भी गया, मतलब नोटिफिकेशन जो है ना इंडेंटिंग के लिए हो गया. एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के लिए भी जो है एनटीपीसी सीपत में ही आने वाला. ठीक है. Yes sir. इसलिए हायर एफिशिएंसी का ट्रेंड क्या है? सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, या सुपर क्रिटिकल, एडवांस सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल. बट इसमें क्या लिमिटेशन क्या होने वाला? मेटलर्जी. तो फॉर दैट व्हाट इज द मेटलर्जी चल रहा है अभी जो ना, सिलेक्शन इज सेलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मटेरियल्स. ओके, टू मीट यूर रिक्वायरमेंट. Research R&D of the metallurgy to meet the higher efficiencies which is useful in the future, coming future. आपका एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा? हायर ऑपरेटिंग प्रेशर और हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर. तो हायर ऑपरेटिंग प्रेशर के लिए, हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर के दोनों के लिए सस्टेन होने वाला मटेरियल चाहिए आपको. ओके, एंड व्हेन न्यू मेटलर्जी हैज कम, इट्स कॉस्ट इज आल्सो वेरी हाई जनरली. वंस इट इज मीन्स बल्क में जो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, मेटलर्जी हो जाएगा ना, देन उसका कॉस्ट भी कम होता रहेगा. बट एट द बिगिनिंग, सपोज मटेरियल रिसर्च इज देयर, सपोज 800 मेगावाट 1000 मेगावाट तक भी है, बट एट प्रेजेंट दैट मटेरियल कॉस्ट इज मोर. तो फाइनली एक प्रोडक्ट के लिए जो ना, नॉट ओनली एफिशिएंसी, इट इज कॉस्ट इकोनॉमिक्स एक्चुअली. ओके, और मेटलर्जी भी जो ना, रिसर्च R&D भी होना है, डेवलप भी होना है, और नेक्स्ट क्या है, दैट मेटलर्जी, दैट मेटल शुड बी चीपर एज पॉसिबल. ऐसा होना है. यू गॉट माय पॉइंट ना? Yes sir. Yes, sir. अदरवाइज कहाँ पे रहेगा? टू गेट योर हायर एफिशिएंसीज यू नीड हाई मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स, हाई हीट एक्सचेंज कैपेबिलिटी मटेरियल्स to sustain the high pressure and high temperature, and at the same time it should be not that much costlier. क्योंकि आप एफिशिएंसी जितना कमाओगे, उससे ज़्यादा कस्ट उनका रहना जो ना, परचेज करने वाला भी नहीं करेगा ना, सपोज. बट गवर्नमेंट से जो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में स्ट्रेस ज़्यादा रहने से उसमें कास्ट ज़्यादा रहने से भी उसमें जा सकते. बट वन मोर थिंग इज रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड. ओके, तो मटेरियल्स का रिलायबिलिटी Yes sir. चाहिए. अब जो P91, P92 सभी जो बोल रहा था, अभी जो बाद में जो ना कुछ कॉम्पिटिशन बढ़िया बोला, इसमें क्या बोले आपका, एक ही जो है आपका टाइमलाइन फ्रेम में नहीं बोल पाए, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है. आपका टॉपिक जो है ना टू द पॉइंट था. एक्चुअल में आपका टॉपिक जो है ना टू द पॉइंट है. जस्ट आप जो ये बोलना था, व्हाट इज द नीड फॉर सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, या एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, और अदर फर्दर और भी कुछ टेक्नोलॉजी आने से उसका एडवांस वाला भी आने से भी आ सकते हैं. ठीक है ना? द ओनली थिंग इज टू गो ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज इट इज अ थर्मल पावर प्लांट. जितना एफिशिएंसी बढ़ाने से आपका उतना कार्बन फुटप्रिंट या एमिशंस कम होता रहेगा ना. दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड ना, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और आपका यूनिट रनिंग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू. So the need of the efficiency improvement is must. For that high parameters, for that high quality materials. One is selection from the existing, other one is R&D for the further materials to meet the future demands. Got my point, na? Actually, so much content Yes. you have put in this. So much content in means सभी जो ना एक लाइन में जा रहा है, लेकिन टू द पॉइंट आपका टॉपिक में जो है ना ऐसा नहीं जा रहा था.
एक बार आप रिव्यू कर दीजिएगा, आपको कुछ समय में आएगा. एंड डोंट थिंक दैट आई एम पॉइंटिंग आउट, जस्ट आई एम गाइडिंग which way it is better to explain, like that. To the point, always whenever you go, suppose वर्ड फाइल में जो है जितना कंटेंट चाहिए उतना लेकर रख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं. बट पीपीटी में जो है पॉइंट्स टाइप कराना है, और टाइम रहने से, आपके पास टाइम रहा, आपका ऑलरेडी कंटेंट जो रहेगा ना, उसका फिर कुछ कुछ ऐड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन पीपीटी में ज़्यादा रखने से उसका तो बोलना पड़ेगा, ऐसा रहेगा ना. ठीक है, ओके. बट इट्स अ नाइस प्रेजेंटेशन एक्चुअली. बट स्ट्रेच आपका जो है ना, स्ट्रेस जो है ना, पूरा जो है ना, कॉन्सेंट्रेट जो है ना मटेरियल्स के ऊपर रहना था. आप जो है ना प्रोसेस के ऊपर भी जा रहे हैं. इसमें मेटलर्जी में मटेरियल्स का पॉइंट ऑफ व्यू में रहना है ज़्यादा. प्रोसेस रिक्वायर, प्रोसेस डिमांड करते हैं. प्रोसेस डिमांड क्यों करते हैं? वो प्रोसेस को जो है एडवांस प्रोसेस को हम डिमांड करते हैं, क्योंकि हायर एक्सचेंज के लिए ना, राइट. Yes, sir. प्रोसेस को हम डिमांड करते हैं. तो दैट प्रोसेस डिमांड है हाई मेटलर्जी. टू मीट दैट वन, मेटलर्जी में क्या रिसर्च चल रहा है, ये चाहिए, ये रखने से और पॉइंट रहेगा. यू गॉट माई पॉइंट. बट अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. बट आपका जो ना, जो मेटलर्जी का है, मेटलर्जी का भी बोला है, बॉयलर ऑपरेशन भी बोला है, सभी बोला है आप लोग. Yes, sir. समझ रहे हैं जो बोला हूँ? हाँ सर. टू द पॉइंट रहना, Yes, उधर sir. का To जो the point रहना है. हाँ, टू द पॉइंट रहना. Yes, sir. तो कंटेंट ज़्यादा कम करके ऐसा नहीं है. कंटेंट ज़्यादा रहने से ज़्यादा टाइम लेगा, कंटेंट कम रहने से कम टाइम लेगा. और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है? आप आपका कोऑर्डिनेशन के साथ, ग्रुप मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जो ना वो करना है. हाँ सर. कितना टाइम, 30 सेकंड, 1 मिनट बिफोर ही कंप्लीट करने के लिए कोशिश करना है. देयर इज नो लिमिट, क्योंकि जो ना प्रेजेंटेशन 15 मिनट, मात्र 15 मिनट हो गया. चाहे तो जो क्वेश्चन एंड आंसर्स में जो ना आप कुछ कंटेंट और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना. क्वेश्चन एंड आंसर्स में तो है ना. हाँ Why सर. to lose your time in the name of not fulfillment of the presentation within time? Right, not required. Got my point? This is a mistake. Yes, sir. Actually सभी इंफॉर्मेशन बोलने से क्वेश्चंस नहीं करेगा करके नहीं है. क्वेश्चन करेगा. आपके पास कुछ डेटाबेस रहना है तो ना क्वेश्चंस का समय में भी कवर कर सकते हैं. दैट विल नॉट बी काउंटेड इन दी प्रेजेंटेशन टाइम. तो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन टाइम में कंप्लीट करो. अभी भी कोई भी, मैं सबको बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन को विद इन द टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना. फिर क्वेश्चन एंड आंसर में आने देना, उसका लिमिट नहीं रहेगा. क्योंकि जो वो लोग जैसे पूछते रहेगा, आप बोलते रहोगे, उसमें टाइम फ्रेम नहीं रहेगा. वो पूछ रहा करके आप बोलते रहोगे ना. गॉट माय पॉइंट. हाँ Whatever the सर. content is, Yes. you can express your content freely. That time. It is not time dependent. है ना? But content is nice. हाँ सर. Content is nice, but the quantity of your metallurgy should be more. Actually क्या हो गया, दूसरा तीसरा कंटेंट आने के चक्कर में उसका परसेंटेज ऑफ मेटलर्जी कम हो गया. एक्स्ट्रा टाइम भी ले हाँ लिया. सर. 7-5 मिनट मतलब 30% टाइम एक्स्ट्रा ले लिया. 30% का समय में तो दूसरा कंटेंट को निकालने से टोटल कंटेंट में मेटलर्जी का कंटेंट भी बढ़ने वाला था आपको. समझ रहे ना? हाँ सर. एंड वन मोर थिंग, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो बोल रहे हैं इट्स नॉट अबाउट पिन पॉइंटिंग, बिकॉज आप लोग आज प्रेजेंटेशन किया, फिर कब करता है, इधर करता है क्या, हमारे से करता है कि नहीं करता है पता नहीं. बट आप कहीं पे भी जो जाए, कोई भी इंडस्ट्री रहे, कोई भी सिचुएशन रहे, कभी भी जो प्रेजेंटेशन करते हैं, सिचुएशन प्रेजेंटेशन भी बोले, कोई भी बोलिए, तो टाइम फ्रेम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और कंटेंट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. टू दी पॉइंट रखने से बेटर है. कुछ किसी का कुछ डाउट रहे तो पूछेगा, उसके बाद एक्सप्लेन करने से जो ना दैट इज अ डिफरेंट टाइम फ्रेम में आ जाएगा, विच इज नॉट इन योर प्रेजेंटेशन टाइम फ्रेम. ओके, सो टेक केयर इन दोज थिंग्स. सिर्फ मैं आप लोगों को करके नहीं है, सभी लोगों को बोल रहा हूँ. बट इट फाइनली जो ना, दिस इज द लास्ट प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू वेरी मच. और फर्दर रिसर्च R&D का जो ना लिमिटेशन नहीं है, इट गोस ऑन बिकॉज अभी सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, एडवांस सुपर, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और क्या क्या आता है पता नहीं. अभी प्रेजेंट जो ना आपका एफिशिएंसी कितना तक गया थर्मल पावर प्लांट का मैक्सिमम? सर 55% AUSC. क्रॉस हुआ? नहीं सर, है ना उसमें जो USA वाला जो चल रहा है डेवलपमेंट. क्या पार्ट पे बोल रहे हैं आप? सर पे बोल रहे हैं क्या पार्ट पे बोल रहे हैं?
जो भी है अभी आने से पता चलेगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक 50 क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन सपोज सुपर क्रिटिकल में भी अराउंड 38 है, एडवांस सुपर क्रिटिकल में अराउंड 41 है, 3% मोर. Suppose that is in Kargon. I think in one of your slides you mentioned there, but efficiency is not mentioned in advanced supercritical. So ultra supercritical means more than 41, around 40 to 45. और advanced ultra supercritical है तो जो ना इससे ज़्यादा बड़े भी रहेगा, मतलब उससे बड़े improved efficiency भी रहेगा, ठीक है ना. तो उसकी 48, 50 तक जाता है तो पता नहीं, देखते हैं तो पैरामीटर सामने पता चलेगा, ठीक है. बट फर्दर रिसर्च भी जाता रहेगा. एफिशिएंसी का मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट क्या है? 100 है. 100 तक मतलब मैक्सिमम एज पॉसिबल मैक्सिमम करने के लिए कोशिश करता है. मैक्सिमम इज 100. ओके. तो बट एफिशिएंसी करके जो ना 100 तक अच्छे तक तो उतना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन बट एज ए थर्मल पर्सन ऑलवेज बट लास्ट हम करते करते एफिशिएंसी जितना बढ़ा सकते वो बढ़ाते रहेगा, ठीक है. ओके. एनीवे दिस इज अ गुड प्रेजेंटेशन एंड सिंपल, बट कंटेंट बहुत ज़्यादा रखे. टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स. ओवरऑल इट्स एन एक्सपेंट. ओके. आप लोगों का चेंज और सभी भी थैंक यू वेरी मच. अभी को आपका कंटेंट भी ज़्यादा है एक्चुअल में, जो ना आपका इसमें जो ना कितना कंटेंट रहना करके बोलना भी मुश्किल है. कुछ कंटेंट जो रहता है लिमिटेड रहता है, कुछ कंटेंट जो ना अनलिमिटेड रहता है, कितना भी रखे कम ही लगते हैं. कुछ कंटेंट जो ना रखने के लिए ज़्यादा नहीं रहता, लिमिटेड रहता है. तो बट वाट एवर इतना टाइम फ्रेम मेंटेन करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए कोशिश, कितना कंटेंट रखना है आपके गिवन टाइम में कंप्लीट करने के लिए, कि कैसा कंटेंट रखने से बेटर, बुलेट पॉइंट टाइप कराने से और बेटर रहेगा. लंबा लंबा सेंटेंस रखना. ठीक है. ठीक है. टाइम रहने से बुलेट पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे रहेगा. कभी भी पीपीटी में बुलेट पॉइंट्स टाइप का रहना. ठीक है. ओके. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम एंड एनीवे लास्ट प्रेजेंटेशन. ओके. नो प्रॉब्लम. थोड़ा टाइम ले लिया बट स्टिल ओके. Okay, so finally we come to an end to this session. It was a great session today. Thank you all. हम जो जितने एक्सपेक्टेशन किया आप लोग जो ना बढ़िया बोले हैं, बिकॉज यू आर आल्सो न्यू जनरेशन स्टूडेंट्स, so that's what and you might be reading the subject here and there and all these things, so that's what you also may know from your point of view, and few things are also new for us. Sometimes it is interesting to us also. थैंक यू वेरी मच टू ऑल. एंड और जो रहेगा फिर कल का जो प्रोग्राम है फीडबैक सेशन एंड क्लोजिंग सेशन रहेगा, और टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करते रहिएगा. मोस्टली जो ना फर्स्ट हाफ में जो ना फीडबैक ग्रुप का समय में हमारा HOP सर भी रहेगा. ठीक है.